हेलो गाइस, वेलकम टू क्लाउड डेटा नेक्सस। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम जानने वाले हैं बेसिक्स पाइथन के ऊपर। पाइथन में कितने वेरिएबल्स होता है और पाइथन में कितने ऑपरेटर्स रहते हैं, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। उन ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं, ऑपरेटर्स को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं अभी एक चैनल पे अभी एक सीरीज़ लाने वाला हूँ जो बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल ऑफ पाइथन के लिए होगा। तो मे बी इट हेल्पफुल टू यू गाइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इफ़ यू गाइस कैन सी, मैं अभी अपने जुपिटर नोटबुक पे लॉगिन कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों के पास जुपिटर नोटबुक नहीं है तो आप कहीं भी लाइक विजुअल स्टूडियो और गूगल कोलैब पे भी आप, जिन लोगों को पता नहीं है, गूगल कोलैब वो एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पर आप अपने पाइथन के कोड्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। सो नाउ आई हैव लॉग्ड इन टू माई जुपिटर नोटबुक। सो फर्स्ट start with the variable. Before starting knowing the variable, you guys have to know about the some basics hierarchy of the Python. जो हमारा पाइथन को कोड को लिखने के लिए ज़रूरी होता है, एक हायरार्की होता है, उसको जानने पहले ज़रूरी है। तो पहले आता है लाइब्रेरीज़, उसके बाद अंदर आता है पैकेजेस एंड देन मॉड्यूल्स, देन क्लास एंड देन फंक्शन एंड देन वेरिएबल्स। If I start with this variable, some of the variables makes a function and some of the functions make a class, and after that some of the class makes a modules, and then same thing with the some of the modules makes a packages, and then some of the packages makes a libraries. Okay, so starts with a variable. Okay, how can we define a variable? For that I am taking a x. इस x के अंदर हम कुछ इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं लाइक 20. ओके, and now run it. You guys can simply run it by typing control plus enter, or otherwise you can simply run it by this option, run. Now I am adding a new cell by clicking this plus symbol. Now चेक करते हैं इस x के अंदर 20 जो वैल्यू है वो स्टोर हुआ है कि नहीं। फॉर दैट यू कैन सिंपली टाइप x एंड प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर, एंड यू कैन सी ये जो 20 हमारे एक्स के अंदर स्टोर हो चुका है। सो और एक प्रोसीजर है जिसके मदद से हम लोग जान सकते हैं कि एक्स के अंदर वैल्यू स्टोर हुआ है कि नहीं। फॉर दैट नाउ आई एम टेकिंग अ न्यू सेल एंड हियर आई एम प्रिंटिंग प्रिंट एक्स, सॉरी, आई थिंक प्रिंट एक्स, एंड नाउ लेट्स रन। सो यू गाइस कैन सी ये जो 20 है हमारा प्रिंट एक से भी शो कर रहा है। तो अभी और एक फंक्शन है और एक कोड है जिसके मदद से हम जान सकते हैं कि एक्स के अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं। वो है रिटर्न स्टेटमेंट से। ओके, सो बट बिफोर यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट, आई वांट टू मेंशन सम basic exception of this return statement. Like first run type this return statement, return x. But I want to mention some point here. Like, you can't use this return statement outside of a function because here we don't declare any function here. अभी तक हम लोगों ने कोई फंक्शन क्रिएट नहीं किया है। तो अगर हम लोग इस रिटर्न स्टेटमेंट को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोगों ने किसी फंक्शन को क्रिएट नहीं किया है, तो अभी एक्स का जो आउटपुट है वो नहीं दिखाएगा। इफ आई रन दिस कोड, यू कैन सी अ ऑप्शन रिटर्न आउटसाइड फंक्शन। सो अभी हम देख सकते हैं कि रिटर्न आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन नहीं कॉल हो सकता है। तो अगर आप इन दोनों मेथड से एक्स या फिर प्रिंट एक्स, इन दोनों को यूज़ करके आप अपना वेरिएबल्स को शो कर सकते हैं। ओके, so now delete this. You can simply delete it by this cut option. Okay, now let's store this is for the integer value we are storing. Now let's store a floating value. Okay, for that I am creating a new cell. Here I am taking y. In this y I am storing a float value 23.58. Okay, now let's run it. Here you can see now its value is stored. अभी हम लोग जानना चाहते हैं कि एक्स एंड वाई का एडिशन हो सकता है कि या फिर नहीं। एक्स में हमारा एक वैल्यू स्टोर है, वाई में भी हमारा एक वैल्यू स्टोर है। नाउ लेट्स चेक इट, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आता है। ओके, नाउ फॉर दैट आई एम क्रिएटिंग अ न्यू सेल एंड एडिंग प्रिंट एक्स प्लस वाई। नाउ लेट्स रन इट। Here you can see this is the addition value.
43.58। सो अभी हम लोगों ने इंटीजर वैल्यू वेरिएबल को स्टोर कर लिया, इंटीजर फ्लोटिंग वैल्यू को भी स्टोर कर लिया। अगर क्या होगा अगर हम लोग किसी स्ट्रिंग या कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, लाइक समवन्स नेम, समवन्स प्लेस। ओके, सो लेट्स चेक इट। फॉर दैट आई एम एडिंग अ न्यू सेल। ओके, I am storing this character variable like cloud data nexus. I'm storing this value. Now let's run it. Let's see what happened. Invalid syntax. This invalid syntax is coming because when we are declaring any string or character variable, so for that we have to use the invited comma. Okay. So now let's run it. Let's see there is any error or not. Okay, here you can see the code is run. And now let's check for the z value. Okay, adding a new cell, z equals, what is the value of z? Now let's check. Here you can see this is the value of z, cloud data access. So अभी हम लोगों ने जाना कि एक इंटीजर वैल्यू को कैसे स्टोर करते हैं, एक फ्लोट वैल्यू को कैसे स्टोर करते हैं और एक स्ट्रिंग और कैरेक्टर वैल्यू को कैसे स्टोर करते हैं, वेरिएबल को कैसे स्टोर करते हैं. Now let's come with the operator. How many operators we have in the Python? Okay, let's start with the first operator. Okay, what is the first operator in the Python? The first operator is arithmetic operator. Arithmetic operator. So what's come under this arithmetic operator? So here you can use plus, minus, multiplication. Okay, what's multiplication, division, double multiplication. Okay, here I think I have minus. So double division. And here you can also use the percentage. Okay, now let's do some operations on using these operators. Okay, for that I have a questions, like type a questions here. First question, assign two variables named as age and weight, and do some operations. Do some operations. Okay, let's do this with some hands-on practice. Okay, for that I am adding a new cell and now take some value of age. Suppose I am taking age as 20. Let's run it. And एक weight भी ले लेते हैं, चलो. Weight equals to 60.5. Okay, now let's also run it. And now perform addition, multiplication and division. Okay, so for that, now let's check it. Adding a new cell. Age plus weight. Also age multiply weight. And also age divide by weight. Now let's run it and see the value. I think it's for that I have to again. Okay, here you can see age plus weight is 80.5. And for that, wait a minute, I'm adding a new cell. Age into it. Let's run it. Okay, and let's what divide age divide by weight. Let's run it. Okay, this is 0.33. Okay, now let's know about some another operator, which is logical operator. Okay, now add a new column. Second operator is logical operator. In this logical operator, what comes? Let's check. In this logical operator comes and,
or and not. Okay. For these questions, this assign two variables, हम लोग इसी क्वेश्चंस के ऊपर अभी एंड और एंड नॉट परफॉर्म करने वाले. ओके. सो अभी एक न्यू सेल ऐड करते एंड आई एम डूइंग एज एंड नॉट. ओके. So now understand the top logic of AND operator. Okay. Here you can see the age value is 20 and the weight value is 60.5. So अभी यहाँ पर weight ज़्यादा है 60.5 compared to the age का value 20 है. So it will give the higher number, like it will give show the output as 60.5. Now let's check our code is working properly or not. Sorry, I have done the wrong thing. Like, wait. Okay. Here you can see it comes 16.60.5. Okay. You guys can perform also odd and not. I am not showing it because for that videos थोड़ा lengthy हो जाएगा. तो other operators पे जाते. Other operator is comparison operator. Okay. इस पे हम comparison करते तो इसके लिए इसका नाम है comparison operator. Like 3 पे comparison operator. In this comparison operator, what comes? Let's check. In this comparison operator comes double equals to, not equals to, greater than, sorry, greater than equals to, also less than, and less than equals to. Okay. So when we are performing comparison operator, the output is always in the Boolean format. Okay. So here is a key highlighting. When we are doing the comparison operator, comparison, it will give the output always in Boolean. Always in Boolean. Okay. So let's perform the Boolean comparison operator. For that, now I am performing the double equals to. Let's check. Age is equal to, wait. So आप लोग अभी देख सकते हो एज का वैल्यू है 20 एंड वेट का वैल्यू है 60.5 which is not equal. So let's check what is the value output. Here you can see false. Age is not equal to weight. So if I perform now one another operator like the one another comparison operator like greater than equals to. Okay. Now perform greater than equals to. I'm comparing weight is greater than equals to age. Let's check what is the output. You can see true because weight is 60.5 and the age is 20.5. Let's go with the another operator. Let's check what is the another operator. The another operator is what is the this is the third operator comparison and the fourth operator which is membership operator. Membership operator. In the membership operator, what comes? Here it comes is not, in, not in. This is not in, not in. These are the membership operator. Let's check how can we perform this membership operator. Okay. For that, I am adding a new cell. In this new cell, I am taking an array. Then name it as XYZ. And in this XYZ, I am taking some value 21, 35, 46. And let's take another value 58. Okay. Let's run it. Taking a new cell.
Now we are going to check in this XYZ we have 21 or not. Okay. First, let's check the type of XYZ. Okay. For checking that, you can type in that bracket XYZ. Let's check what is this type, what is the type of XYZ. You can see this is a list. Okay. It is giving the output as list. Okay. Now let's perform in is. Okay. For that, I am adding a new cell. And now we are performing 21 is, sorry, in XYZ. You can see it's giving true because 21 is present in XYZ. Okay. And now I am performing not in. Okay. Let's check for the not in. Wait a minute. I'm adding a new cell. Let's check 38, which is not actually present in the this array. Okay. 38 not in XYZ. Let's run it. You can see it's giving true. Okay. If I do it here 35 and run it, you can see false because 35 is already present in XYZ. Okay. So let's start end with this last operator, which is assignment operator. Okay. The number 5, which is number 5, assignment operator. What comes under this assignment operator? Here comes equals to, sorry, equals to, plus equals to, minus equals to, I think here I give to if comma, plus equals to, also multiply equals to, and divide by equals to, and also with the double multiplication equals to, double division equals to, percentage equals to also comes here, percentage equals to. Okay. These are some assignment operators. Okay. Now let's perform this assignment operator. Okay. For that, we have the age value. Like here you can see the age value is now 20. Okay. Now we want to increase the age value. We can increase this age value by this assignment operators. तो कैसे हम इस एज का वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं देख लेते हैं चलो. फॉर दैट आई एम एडिंग अ न्यू सेल. Here you can see I am increasing the age value by 20. Okay. अभी एज का वैल्यू है 20 और मैं अब और एज को 20 प्लस ऐड करना चाहता हूँ. सो लेट्स चेक नाउ. ओके एंड नाउ लेट्स चेक फॉर द एज. मैंने 2 बार एक्चुअली ऐड कर दिया तो अभी एज का वैल्यू हो गया 60. ओके. What happened if you want to decrease this age value? Okay. For that, we have to use this minus equals to operator. Okay. So now let's add another cell. In this cell, I am doing age multiply divide minus equals to. I want to decrease it by 10. Okay. And print this age value. Enter. Here you can see the previous value is 60 and I want to decrease this value by 10. So the value is now 50. Okay. सो ओके दैट्स इट गाइस. यही 5 ऑपरेटर हम लोग पाइथन में यूज़ करते हैं. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो.